Yes, it's recording. So, Yeah. yeah. So, hello guys, hello and welcome everyone. This is one of the first videos of the channel We the Women of India. We are doing a series of videos where we are talking to PhD scholars about how to prepare for a PhD interview. तो ये हमारा पहला ऐसा वीडियो है जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि पीएचडी इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करें, स्पेशली जेएनयू के लिए। हमारे साथ जो भी स्कॉलर हैं वो जेएनयू से ही हैं। आज टुडे वी हैव शाश्वती विद अस। शाश्वती इज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ सेंटर फ्रॉम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। तो आज शाश्वती हमारे साथ हैं एंड विल बी टॉकिंग टू हर अबाउट कैसे इसके लिए प्रिपेयर किया जाए। एंड या सो the very basic question, I think the first question is कि when you think about PhD, so how do you think about your topic? How do you think about कि okay, this is the topic that I want to work on or explore, और इसके अराउंड मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो what is this process and how does it start? All right. I think this whole idea, of starting off your research proposal, it comes with daily experiences along with the study that you do. And especially if you are into research and you have made your mind that you want to enter into PhD, that's a long-term commitment, like all of us know. And so we are also, like since we are doing a PhD in JNU or any of the institutions in across India or the world, everyone has a basic purpose in mind कि ये करना है मुझे, and that is a long term commitment that we are entering. Uh, you know, Also the challenges. At least most of us we have it in mind. So the whole idea of structuring the proposal, I think it comes with a lot of life experiences also. Like for example, मेरे proposal की मैं बात करूँ तो I started off with something called oral tradition surrounding the cult of Krishna. So that came in with an idea that I did my masters in Northeastern Hill University, Shillong. So one of our professors who was also from JNU, she was a direct student of Romila Thapar in CHS. So she told us about the whole idea of oral traditions and how they have come into vogue very recently. So how they also corroborate with the literary sources, or how they can be useful, at least for the quote unquote lay people, in understanding history or in understanding the social fabric, of any particular community or the society as a whole. So that thing struck my mind, and I thought that why not do my PhD around that. But then this whole thing, about structuring the research proposal, it is a very rudimentary or a basic understanding of the content of your research. It invariably undergoes through a lot of changes as you actually enter into the actual field of research, especially if your research is field visit oriented. You actually encounter a lot of things that that will strike your mind in the process. So it is actually a learning in process. But since we are talking about structuring the research proposal, though it is very tentative, you have to be absolutely clear about the message that you have to convey. And Hmm. that comes with, yes, what you read and what you experience in life. So the message, if I can take just 1 minute, Sure. 1 minute more, so it would be like, yeah, so the message should be clear and it should reach the interviewer or the examiner. What you're trying to convey through your research, what are Hmm. the implications for this, what are the prime intentions behind carrying the research, what are the gaps that are after reading the literature that have already been written on that topic, what are Hmm. the gaps that you have found that you think your research will actually fill in the void. Hmm. Hmm. So yeah, I think that that message should be clear, irrespective of whatever topic you choose to go Hmm. about. Hmm. So I think that is my, but then of course it's a learning in process, and all Hmm. of us are just learning. That Yeah. is it. Yeah. So yeah. Yeah, so just
टू समराइज इट इन अ बिट कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका जो टॉपिक है वो इवॉल्व करेगा, बट एट एन इंटरव्यू लेवल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप इस पॉइंट पे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो उतना आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए, बाद में वो इवॉल्व कर सकता है। And you talked about the gap in existing literature. If you can elaborate a bit on that, because that is an extremely important point that people should know. Yeah. So, especially, you should be like I've told about the existing literature. So the research proposal should also carry a section on the survey of existing historiography or the existing literature. कि ये आपको करना है, इसमें आपको करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये लिटरेचर ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। तो आफ्टर रीडिंग थ्रू दिस एंड दैट यू गेट टू नो कि इस टॉपिक में ऐसे गैप्स है, सो Hmm. माय रिसर्च विल एक्चुअली कम फॉरवर्ड, आई विल कम फॉरवर्ड विद दिस सो दैट इट विल फिल इन द वॉइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ओरल ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रही थी पहले, तो वो मेरा इनिशियल टॉपिक ऑफ रिसर्च था, but then my topic has evolved a lot after I actually went to the field, like I have said before. So now I have also included not only the cult of Krishna but also the tantric tradition. So this now is a comparative analysis of Vaishnavism, Shaktism, and the newer traditions that came up as a result of the synthesis and the like we know about the confrontation and assimilation of Hmm. cultures, no, Hmm. whoever are there in sociology and all. Hmm. So that like I said, is a processor. So gap ke bare mein agar baat kiya jaye, so in my experience what I found out is that though there are a lot of work that has been done on the tantric or the shaktism cult, shakti cult, but then a lot has not been worked upon, Hmm. especially in the Vaishnavism sector in Assam. And even though there are certain texts, there is not a particular comparative analysis that has been Hmm. done between the Hmm. two cults or traditions. So, mere hisab se, mera research isme, it will advance the whole theory in the sense that it will actually work towards, Hmm. seeking a comparative analysis between the two and also finding out कि इसमें इसमें कौन से सिमिलैरिटीज है या कौन से Hmm. डिफरेंसेस है, Hmm. और आफ्टर एसिमिलेशन कौन से नए नए ट्रेडिशंस आए एज अ रिजल्ट ऑफ द एसिमिलेशन, Hmm. सो Hmm. मेरे हिसाब से गैप वो है कि पहले ये किया नहीं गया है। सो योर रिसर्च विल एक्चुअली यू विल कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी एंड ऑल्सो Hmm. एड इन Hmm. that research thing so Hmm. that you'll fill in the gap, fill in the void. So Hmm. वो है Hmm. बहुत सिंपल टर्म्स में यही Hmm. रिसर्च गैप है। Yeah. तो ऑफ कोर्स आप भी इसमें एलैबोरेट कर सकती है डेफिनेटली। Yeah. So तो basically, आपका कि पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ। तो बेसिकली कि या तो जिस पे काम अभी तक नहीं हुआ है, एंड अगर हुआ भी है तो इन केस यू टॉक्ड अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस, तो ब्रिंगिंग इन ऐसा पर्सपेक्टिव जिस नज़रिए से पहले इस काम को देखा नहीं गया है, इस टॉपिक को देखा नहीं गया है। या सो ओके, एंड इफ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट, तो पहला तो जैसे बताया कि आइडिया क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस क्वेश्चन को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यू हैव टू कम अप विद अ क्वेश्चन, एंड देन देयर वुड बी मेथोडोलॉजी और सोर्सेस। तो इफ यू कैन इलैबोरेट अ बिट ऑन के क्या क्या मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं और सोर्सेस जो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, इस पे इफ यू कैन इलैबोरेट अ बिट दोनों चीज़ों पे। हाँ, तो कमिंग टू द रिसर्च प्रपोजल, तो जैसा कि आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देर आर फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स दैट देर इज अ बेसिक फ्रेमवर्क कि हम सब एक्चुअली इसमें लूजली ये फॉलो करते जाते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन रहेगा, that would consist, the crux of the entire research proposal. It will like the message, हम्म. it'll convey the main message, the creatrix of the entire thing. फिर उसमें आएगा लिटरेचर रिव्यू, जैसा कि हमने बात किया, एंड लिटरेचर रिव्यू विल ऑल्सो इंक्लूड दैट द क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च गैप। उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगा। सो मेथोडोलॉजी कैन बी लाइक ऑफ कोर्स वेरी बेसिक टर्म्स में क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव या फोकस ग्रुप
कह लीजिए आप. So that you will get to know like how you would want to proceed with your research कि आप कैसे, क्योंकि at the back of your mind all of you will have that idea कि हम लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये हम्म हमारे पोटेंशियल प्राइमरी सोर्सेस होंगे. और प्राइमरी सोर्सेस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात किया जाए तो मैं अपनी बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इट इज इजियर फॉर हम्म मी टू हम्म एक्सप्लेन. सो जैसे कि वैष्णविज्म में अगर मैं सत्रास की बात करूँ तो हाल ही में मैं माजुली गई. तो आई टॉक टू ऑल ऑफ दी सत्राधिकार जो कि यू नो हेड ऑफ दी सत्रा इंस्टीट्यूशंस. तो उसके बाद मैंने कोलैबोरेट किया लिटरेरी सोर्सेज जो मुझे मिले. हम्म तो दैट यू नो आई ऑलरेडी हैड it in the back of my mind कि ये मैं literary sources collect करूँगी, and of course a lot of suggestions will come in you know in the हम्म course of हम्म the journey. तो हम्म उसके बाद मैं इनको लिटरेरी सोर्सेस और ये जो मेरे प्राइमरी सोर्सेस और जैसे कि मेरे इंटरव्यूईज जो हैं हम्म उनके यू नो जो पॉइंट ऑफ व्यूज है मैं इनको कोलैबोरेट करूंगी और लिंक करूंगी और एनालाइज करूंगी कि ये अच्छा ये थोड़ा एग्जेजरेटेड लग रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रही, ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, तो हम्म इसमें हम्म लिटरली अच्छा ये दोनों मिल रहे हैं. तो हम्म आई विल एक्चुअली यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ इट लाइक यू नो. सो ऐसा है कि और मेथोडोलॉजी आपको जर्नी से पहले ही थोड़ा पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे करना है. यू नो फॉर एग्जांपल लाइक इन अ सर्वे यू नो दैट फॉर एग्जांपल इन एन इलेक्टोरल सर्वे अगर आपको करना है कि ये मुझे ये फोकस ग्रुप you know interview करना है. For example, if I'm interested in a Bengali Hindu constituency, for example, so I will go and target, there would be a target populace कि इनको मैंने जाना है और डायरेक्टली इंटरव्यू करना है, दिस वुड बी माय फोकस ग्रुप. हम्म और हम्म उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी है, एंड अगेन द होल यू नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द मेथड एंड मेथडोलॉजी वो आपको पता चल जाएगा थ्योरेटिकली कि क्या है. हम्म So it all depends on the approach that you take. हम्म So the methodology is all about the approach. उसके बाद क्या हम्म आएगा, the tentative chapterization हम्म कि इस chapter के बाद मुझे ये करना है, but of course that will again invariably change during the course of the research. But then since research proposal में वो आपको include करना है, then you'll at least have certain research questions, not more than 5 or 6, and the tentative chapters. और हम्म उसके बाद लास्ट में आएगा कंक्लूजन. सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. हम्म इंट्रोडक्शन आएगा, उसमें हम्म रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, उसके पहले लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप, फिर रिसर्च क्वेश्चंस, और उसके बाद जो होता है कि टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, एंड लास्ट में कंक्लूजन. सो दैट इज यू नो टू समराइज इट हम्म इन अ नटशेल. या सो बहुत ही सही स्ट्रक्चर, आई थिंक इससे बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना है. सो जैसे एक चीज़ पे आई वुड लाइक टू पुश यू अ बिट कि मेथोडोलॉजी वाला तो चीज़ें जब हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन आ जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेक्सचुअल एनालिसिस. व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री तो आपका थोड़ा आर्कियोलॉजी भी एंटर करेगा एंड हाँ. ओरल सोर्सेस भी एंटर करेगा, तो वो पूरा डिफरेंट हो जाएगा. बट बाकी जो सैम्पलिंग है वो सारी चीज़ें तो लोग पढ़ के आए हैं. बट जो ये सोर्सेस हैं, कोई प्लेटफॉर्म्स अगर आप बता सके, जैसे जे स्टोर्स पे लोग सेकेंडरी सोर्सेस देख सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेस के लिए हिस्ट्री में यू गो टू द नेशनल आर्काइव या नेशनल म्यूजियम. या तो इस तरीके के. IGNCA भी है in Indira Gandhi. I mean, if you're located in Delhi, then या of course there are a lot of sources for जो manuscript library है, museum and library, हुँ, NMML है. So वो सारे sources आप definitely जाके you can हुँ, visit the library and you know talk to the people. The librarians are also हुँ, extremely helpful if you just go and approach them ना. हुँ, तो वो आपको खुद ही दिखा देंगे. IGNCA में जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स के सेक्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट का सेक्शन है, सो वहाँ पे जाइए, आप उनसे मिलिए, आप बताइए, वो कैटलॉग के हिसाब से आपको दिखा देंगे कि ये सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है. जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात हो गई. फिर ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज़ फॉर दोज ऑफ यू हु आर लोकेटेड इन दिल्ली, और बाकी सारे स्टेट्स के लिए भी फॉर एग्जांपल
आई एम वर्किंग इन असम बेसिकली एंड बंगाल दिस एरिया. सो मेरे यहाँ पे पान बाज़ार में मुझे वो मिला, ढास करके एक वो लाइब्रेरी है, वहाँ पे मिल गया मुझे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स. सो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आई थिंक you'll have to also do a some bit of traveling and also try to approach the people, especially the library assistant. वो सारे बहुत ज़्यादा resourceful होते हैं. So हम्म and they will definitely help you if you tell them, especially if you're from an institute like JNU or any other institute. You can just go and ask them and approach them कि आप कैटलॉग में प्लीज दिखा दीजिए कि ये आपके पास अवेलेबल है. एंड इनफैक्ट मेरे केस में तो सारे मतलब मुझे बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिले. they actually went to the extent of actually collecting certain journals. For example, even मंदिर में मुझे ऐसे लोग मिल गए कि पुराने जो जर्नल्स हैं, हम्म फॉर एग्जांपल जो पहले इशू था वो कलेक्ट करके उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैं जाके कलेक्ट करके लेके आई. तो हाँ, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आएंगे, आपको होंगे. हम्म सो या आई थिंक दैट इज हम सबको हुए हैं. सो आई थिंक इन द कोर्स ऑफ द जर्नी you'll get to know, and of course you'll have to approach people nonetheless. yeah So हाँ. yeah and I think एंड इंटरनेट में तो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, जैसा कि आपने हम्म कहा फॉर द सेकेंडरी हम्म sources. A lot of things are available, and once you get into JNU, obviously we have that cyberspace thing. So हम्म everything is available there. So you just have to access the remote access thing and log in, and you'll get ample amount of sources yeah if you are interested in reading it. So anyone can just avail the internet services. तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, EPW से लेके J Store से, मतलब you just have हम्म to read. That's it. Yes. Okay. And last question from my end. So ये हमने सारी प्रपोजल और उसके स्ट्रक्चर को लेके बात करी. इंटरव्यू को लेके इफ यू कैन गिव एनी टिप्स के इंटरव्यू में जब जाते हैं तो कितना कितना बेसिक तैयारी करके जाना चाहिए वहाँ पे जब आप हैं तो किस तरीके का माहौल होता है, कैसे वो प्रोसेस होता है, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट. Yes, I think for the interview, like we have discussed about the research proposal, this in spite of the fact that research proposal बहुत ही tentative आपका idea है, you have to be extremely thorough with the research proposal, क्योंकि ज़्यादातर questions उसी से आते हैं. People will want to know कि आपके research gaps कौन से हैं, आपको कौन से area में work करना है. So they will the most of the questions will be, they'll not ask so much of general knowledge questions कि कहाँ पे क्या हो रहा है. It will be centered around your area of research basically. So मेरे केस में तो वैसा ही हुआ. They were asking me कि आप इसमें कर रहे हैं तो पहले आपका लिटरेचर एक्सपीरियंस कौन सा रहा, आपने कौन सी लिटरेचर पढ़ी है, and what do you think are the research gaps, and already a lot of work has been done on this and that. So how do you think your work will actually, the whole idea of social implication also comes in कि कैसे आपका रिसर्च कंट्रीब्यूट करेगा हम्म to the whole corpus of existing literature. हम्म So that is very important. So confidence is obviously the key, like we know कि पहले आपको जाके आपको अपने रिसर्च को लेके कॉन्फिडेंट होना है कि I want to work on this. हम्म So if they ask, they'll try to attack you with questions, also try to grill you also कि आपका ये relevant नहीं है तो आपको क्यों वर्क हम्म करना है. तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मुझे इसमें वर्क करना है. हम्म एंड आई नो दैट दीज आर द गैप्स, एंड आई नो दैट दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू, एंड आई एम आल्सो फ्लेक्सिबल कि आगे जाके मुझे पता चले कि इसमें ऐसे चेंजेस आ सकते हैं. तो हाँ, आई एम हम्म रेडी टू आल्सो ब्रिंग इन सर्टेन चेंजेस. हम्म पर हाँ, you have to be thorough about your research proposal. So I think those are the basic things हम्म to face an interview. एंड रिसर्च और बाकी प्रपोजल. इतना ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है. हम्म सो रिसर्च प्रपोजल का फिजिकल कॉपीज ले जाना रहता होगा ना, कि यू हैव रिटन अ प्रपोजल. हमारे टाइम में तो ऑनलाइन था बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग. तो ओके. अभी तो शायद रिसर्च प्रपोजल का, हाँ, वो लेके जाना पड़ेगा शायद. एटलीस्ट अ कॉपी, इट्स बेटर इफ यू कैरी इट अलोंग विथ योर टेस्टिमोनियल्स. नो, इट्स हम्म ऑलवेज हम्म बेटर, हम्म सो दैट आप जाके वहाँ पे नर्वस ना हो कि सडनली आपको अगर पूछ दे, तो हम्म you'll have a copy in hand and you'll be ready with it at least. हम्म Okay. Anything that you want to add apart from what you have said till now?
आई थिंक वही है कि हम लोग सारे तो सीख ही रहे हैं, तो आई थिंक whoever is wanting to do their PhD, his or her PhD, wanting to do, I just want to wish them all the best because it's a long term commitment. So अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है और बाकी इधर उधर नहीं जाना है, और then I think it's a long term commitment, and I'm sure कि हम सब इसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे अगर थोड़ा Mm, वर्क mm, के प्रति डेडिकेशन और कमिटमेंट है, तो वही है बस। yeah. Uh, और बाकी थैंक यू सो मच ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए। बिकॉज हम लोग इवन वी आर राइट नाउ इन दैट प्रोसेस कि हम लोगों ने यस, अपने एमए कंप्लीट एग्जैक्टली। किया है एंड वी आर इन दैट प्रोसेस कि वी आर वेटिंग कि इंटरव्यू वाला शॉर्टलिस्ट आए एंड वी गो फॉर द हाँ। इंटरव्यू वैसा तो वी जस्ट यस। थॉट कि देयर विल बी मैनी स्टूडेंट्स लाइक अस सो देर आर हम्म। सर्टेन वीडियोज दैट आर ऑलरेडी देयर बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग यूजुअली क्या होता है ना कि आप दो तीन सेंटर्स को पकड़ लेते हो और उन्हीं के स्कॉलर्स आके बात रखते हैं सो जी 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 जी। हाँ। सो वी आर ट्राइंग कि हम लोग ऐसे सेंटर्स जाएं अलग अलग स्कूल्स जैसे कि ट्रिपल एस हम लोग आज देख रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो हम्म। अप्रोचिंग पीपल फ्रॉम SIS साइंसेस कि दे ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड शेयर देयर या। एक्सपीरियंस सो दैट वे सभी डिसिप्लिन्स के लोगों को एक थोड़ा गाइडेंस हो हमारा वैसे ये स्पेशल सेंटर हो गया है, सो वी आर बेसिकली promoted टू स्पेशल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो वी आर नो लॉन्गर अंडर एसआईएस, बिल्डिंग वही है पर ये स्पेशल सेंटर है आजकल। no सो no या, yeah दैट्स वन रीजन टू सेलिब्रेट। yeah it was आपको much पता। needed yeah यस 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 यस। yeah सो मे बी वी विल ऑल्सो ब्रांच इन द कमिंग ईयर्स। सो वही है कि नॉर्थ ईस्ट स्टडीज को लेकर भी पीपल आर बिकमिंग वेरी इंटरेस्टेड, hmm. latest, I mean, recently. Yeah, yeah. So thank you so much, Shashwati, for joining us today and for sharing these insights. बाकी जो लोग जो साथी हमको देख रहे हैं we will have a number in our description of this video. तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप उस नंबर पे भेज सकते हैं हम वो जो क्वेश्चंस हैं वो शाश्वती को फॉरवर्ड कर देंगे और वो जो भी क्वेरीज के रिस्पॉन्सेस आपको देंगी वो हम आप तक पहुंचा देंगे तो इन केस ऑफ क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड इफ यू वांट टू join a community of people के जो लोग PhD के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये वीडियो देखा थैंक यू शाश्वती फॉर ज्वाइनिंग अस एंड Thank you so much, Janvi. Thank you yeah so much. we'll be back with another video soon yeah